when an anti-Waqf amended act protest briefly turned violent at Silchar in Assam when a group of protesters started pelting stones during a rally. Police had to apply force to disperse the crowd and control the situation. Scores of people from the minority community took part in a protest march from the Berenga Madhurbond area carrying placards and banners. The demonstrators raised slogans against the BJP, creating a charged atmosphere across Silchar town. Well, force had to be used to disperse the crowd from the main road, but no injuries have been reported. Local authorities are on high alert in order to maintain the law and order situation. It's an exclusive visual that Notice Live has accessed. Viewers, an anti-Waqf amended act protest briefly turned violent at Silchar in Assam when a group of protesters started pelting stones during a rally. Police had to apply force to disperse the crowd and control the situation. Scores of people from the minority community took part in a protest march from the Berenga Madhurbond area, carrying placards and banners. The demonstrators raised slogans against the BJP, creating a charged atmosphere across Silchar town. Force had to be used to disperse the crowd from the main road, but no injuries have been reported. Local authorities are on high alert in order to maintain the law and order situation in Silchar. देखिए, हम लोग यहाँ के जितना जो भी लोग हैं, जो मतलब नेतृस्थानीय जो लोग हैं, सब लोगों से हम लोगों ने इस सिलसिले में बात किया है। और जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास लेके कुछ लोगों ने अचानक से एक 300-400 लोग रास्ते पे आ गए, मतलब निकलने के लिए कोशिश किया। इमीडिएटली हमारा पुलिस टीम हम लोग वहाँ पे आए और हम लोगों ने लोगों को डिस्पर्स किया। और डिस्पर्स करने के बाद कुछ मतलब अनरूली लड़के थे जो कोई समझ नहीं रहे थे, तो वो लोग को हम लोगों ने डिस्पर्स करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब रीजनेबल फोर्स हम लोगों ने यूज़ किया। और किसी का कोई ऐसा चोट नहीं है, कुछ नहीं है, ऑल हैव डिस्पर्स पीसफुली। और ये लोग का जो मतलब अनरूली मॉब ये लोग निकालने के लिए कोशिश किया था और पथराव करने के लिए कोशिश किया, उस सिलसिले में हम लोगों ने केस रजिस्टर्ड किया है। और जो भी परपिटेटर्स हैं और यहाँ लॉ आइन मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने के जो लोगों ने कोशिश किया, उनके ऊपर सख्त आईनी कार्रवाई होगा। अचानक से जो ये मॉब जो है वो भड़क गई, पत्थरबाजी शुरू कर दी, कहीं पे क्या इंटेलिजेंस नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हम लोगों का यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब जो लोग निकले थे मोस्टली दे वर पीसफुल। यहाँ के 2-3 लड़के थे जो लोग मतलब कहीं से आए थे। हम लोगों को पता है कि यहाँ के लड़के नहीं, अलग अलग जगह से कुछ लड़के आए थे, 3-4 लड़के। वो लोग ऐसा कोशिश किया था लेकिन वो लोग नाकाम हुए। हम लोगों ने सबको, और वो लोग के जो यहाँ पे जो लोग थे वो लोगों ने समझा कि वो लोग को बस दे हैव बीन डिस्पर्स। और उसके लिए थोड़ा मतलब इसको करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा जो रीजनेबल जो फोर्स यूज़ करना पड़ता है, तो वो मिनिमल रीजनल फोर्स हम लोगों ने यूज़ किया और उसके सिलसिले में सब लोग ने डिस्पर्स हो गया, हर लोग चले गए। अभी सिचुएशन नॉर्मल है, पूरे एरिया में हम डिप्लॉयमेंट हमारा है। और इसी तरह से कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करने के लिए कोशिश करेगा, उसके ऊपर हम लोग सख्त लॉफुल करवाया। দেখা গেছে এখানে পুলিশে লাঠিচার্জ করতে বা পাথর মারা হয়েছে পুলিশের উপরে, কি বলবো? অ্যাকচুয়ালি আমরা তো দেখছি না, কিন্তু এটা যদি হইয়া থাকে এটা খারাপ হয়েছে। পুলিশের লাঠিচার্জ বাইতে হয়েছে, একটা সময় কন্ট্রোলার বাড়ে যার পুলিশে লাঠিচার্জ করছে, যেটা এটা বাইতে হইয়া করছে, এটা আমরা দূষণ না। কিন্তু যদি পাথর মারিয়া থাকে এটা অন্যায় করছে, এটা আমরা কোনো অবস্থায় মানিয়ে নিতে পারি না। এটা সভ্য সমাজে মানিয়ে নিতে পারে না। ইসলাম এবং গণতন্ত্রপ্রেমী জনসাধারণ যারা ভারতবর্ষ সংবিধান মানে, প্রশাসনটা হলো সরকারি সম্পদ। আমরা আজকে পুলিশ প্রশাসনকে শ্রদ্ধা জানাই, সংবিধানকে শ্রদ্ধা করি। যদি এলাকার পুলিশের উপরে কেউ যদি পাথর মারিয়ে থাকে এটা অন্যায় করছে, এটা অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা গর্জে উঠবো।
এবং এটা আমরা মানিয়ে নিতে পারি। আইনি ব্যবস্থা নিলে এদের উপরে যারা এখন যে এলাকায় যদি কেউ আই এভিডেন্স থাকে এলা করছে তার এগেন্সে কোনো অ্যাকশন নিলে আমরা এটা খণ্ডন করতাম না। আর আমার মনে হয় দুপুরে তাকে এটা খারাপ করছে। আর আজকে যেভাবে প্রশাসনের সহযোগিতা করছে এর লাগে আমরা ধন্যবাদ জানাই। All right, we have a correspondent Bikram Sarkar joining us over the phone line. Well, Bikram, that's an anti-Waqf Amendment Act protest that briefly turned violent. How is the situation right now, Bikram? Well, Reshma, presently, if we talk about the situation, it is normal now. Everything has been normalized by the action of police. In the morning, in the daytime, this peace rally was taken out by the people from the community and which was protesting the Waqf Amendment Act to get withdrawal as soon as possible, as called by the All India Muslim Personal Law Board, which will continue till 7th of June. So, with that regard, this rally was taken out where hundreds and hundreds of people gathered and was protesting, carrying the placard in their hands. But suddenly, as said, some of the perpetrators, some of the people unruly substances, they started pelting stones while the police were trying to clear up the crowd and mob, clearing up the mob from the road to get cleared. Suddenly the stone pelting started by few of the people from that crowd which was taken out for the protest. Then the police had to apply force, a minimal force, as said by the SP, that they had to apply minimal force to clear up the entire thing, which has been condemned. We have the statements of the people who are there from that area, like this entire protest was taken from the area of Berenga, Modurban area, which was coming forward towards the town. But suddenly this entire tension erupted. This act has been condemned by a few of the community members. They are also appreciating the police because they have admitted that police had to apply force, as because some of the members from the crowd who were unknown to them started pelting stone, Reshma. Yes, Bikram, we also know that there were, just like you mentioned, there was pelting of stones by the protesters, and then the police forces had to enforce a force on them. Has there been any injuries in this situation? Well, we tried to know from the SP that because as per our sources, it is saying that some of the police personnel and the police jawans got 7 to 8 police jawans got hurted by the pelting of stone, but officially no records came out yet. But no casualties, no harm was happened to any of the protesters or any police personnel, as said by the SP. All right, Bikram, thank you for joining us and giving us all those details.